and that is we had created a custom hook called as use post, in which we had defined one functionality that can be called explicitly, and that is post data. So we had seen a one new hook called as use callback. Use effect we had already seen, and now yesterday we had seen use callback. What is the difference in use effect and use callback? Tell me. Yes. What is the difference in use effect and use callback? Use effect, can use effect be explicitly called? Yes. Can I call use effect explicitly by name? Can I provide name to use effect? Yes. No, we cannot. यूज इफेक्ट को हम नाम नहीं दे सकते. कंपोनेंट जब लोड होता है, यूज इफेक्ट अपने आप कॉल होता है. Whereas use callback say I can create a named logic that I can call explicitly whenever and wherever needed. Okay. So in this use post, I'm going to actually return two things, data and post data. ये दोनों चीजें, मतलब डेटा को भी कॉल रिटर्न करेंगे और इस फंक्शन को भी कॉल डेटा को भी रिटर्न करेंगे और पोस्ट डेटा को भी रिटर्न करेंगे. सो आई एम रिटर्निंग मल्टीपल थिंग्स, डेटा एंड पोस्ट डेटा. ओके, सो ये यूज पोस्ट हमने बना के रख दिया है. ओके, वी डोंट नीड इट इमीडिएटली. ऑब्वियसली पहले तो हमें फॉर्म पे काम करना है, बिकॉज व्हाट आई वांट इज कि ये जो एड एम्प्लॉय का कंपोनेंट है, यहाँ पे आई शुड बी एबल टू क्रिएट अ फॉर्म, some input elements, some text boxes, okay, to get the user id, name, salary, and image path. And then I should have a button, and when I click on button, the data must be added in the backend. Okay, data is posted. And yesterday we had discussed about the different requests that are required. So for sending, for adding the data, for posting a data, I need a request, http post request, right? So to handle this http post request, we had already defined a function, that is use post, a custom hook use post, in which we are having axios dot post, in which we are having axios dot post, so that okay, it will send the post request to the API and add the data. Okay, so now today we are going to focus on creating the form, बिकॉज पहले फॉर्म क्रिएट करेंगे, फिर बटन पे क्लिक इवेंट रहेगा, तब जाके फिर हमें ये कॉल करना है, ये जो लॉजिक हमने लिखा है इसको कॉल करना है. तो इन दिस एड एम्प्लॉय डॉट जेएस, इन दिस कस्टम हुक, ओके, एड एम्प्लॉय डॉट जेएस, राइट नाउ आई एम जस्ट हैविंग वन h1, दिस इज एन एड एम्प्लॉय कंपोनेंट, बट इसके जगह पे आई हैव टू क्रिएट फॉर्म. नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द फॉर्म, react form, okay, so there are two ways of creating the react forms. One is a controlled component, okay, or a controlled form. Another is uncontrolled component or uncontrolled form. So let us see that what is controlled and uncontrolled component.